Good morning, sir. Yeah, good morning, sir. Yes, yes. Good morning to all of you. Guys, we will start within 5 to 10 minutes because बाकी सब participants join कर रहे हैं. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And guys, one request is that if possible, then आप mute रखिएगा. If you have a query, then after in between the session, we will ask. मतलब we will give you the time to ask the questions. So if possible, then mute रखिएगा तो बाकी सबको problem ना हो. And after 1 or 2 days, we will upload this video on YouTube also. तो अगर आपको रिवीजन करना है, then you will get the whole detail over there. पूरा सेशन आपको वहां से मिल जाएगा. Okay. And programs also we will share with you. Hello. 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 Okay, sir. Good morning, sir. Uh, Good morning, everyone. Behalf of Pacific School of Engineering, Computer Engineering Department, I, Professor Krishna Jariwala, warm welcoming to our today's expert, all participants and all faculty members. I am. Can you hear me? Yeah, Hello. ma'am. Yes, ma'am. Please continue. Okay. We all know about today's topic. It's about Python programming and database and how we can use SQL injections process. So it all will be presented by Mr. Sumit Thakkar. Mr. Sumit Thakkar is the CEO of Govardhan Institute. He has a 12 year of experience in developing field. He teach various languages such as a Python, Android, Java, and many more. He has a expertise in Python programming. We are grateful that he is here to share his expertise on programming languages with us on this webinar. Now I'm not taking too much time of yours. I hand over the session to Sumit sir. Before sir start the session, I request all of you please mute your mic, and if anyone have any questions or query, they can communicate with sir in chat box. Thank you, sir. Thank you. Sir. So guys, once again, welcome to all of you and good morning.
So guys, मैडम ने जैसा इंट्रोडक्शन तो दे दिया, so I think all of you are comfortable with Hindi and English both. And once again, I want to just announce one thing. After the session, I will upload this session's video on YouTube, so you can access that from the YouTube also, and we'll upload these programs on my website. आपको जो link forward किया हुआ है उसमें भी वो mention किया हुआ है कि कहाँ से आपको I will just आपको वो URL भी मैं आपको बता दूंगा. So after that you can get all this. एंड आज हमारा कंसेप्ट कैसे रहेगा, फर्स्टली वी विल बी फेमिलियर बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें ऐसे भी हैं जिनको पाइथन कुछ भी नहीं पता. So we will start with the Python. After that, we will try to connect it with the database, and after that, we will hack our database by using the SQL injection. Okay, हम हमारा ही database hack करेंगे, and after that हम उसका solution find out करेंगे कि हाँ भाई इस hacking को कैसे रोका जाता है. Okay, so I think we have to wait for 1 or 2 minutes क्योंकि अभी और भी सारे students waiting में है. So guys, after a minute I will start. Okay, 1 मिनट और वेट करते हैं. एंड अगर किसी को क्वेश्चन है तो लाइक जैसे पाइथन का थोड़ा सा टीच करने के बाद में 1 or 2 मिनट का आपको टाइम दूंगा अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछने के लिए. ओके, सो वी विल क्लियर द डाउट इन दैट वीडियो. सो ओके, सो लेट मी स्टार्ट. सो मैडम जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ दैट बट स्टिल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. लाइक माई सेल्फ सुमित, एंड I am working with this much of languages like Java, Python, and etc. things, and more than 12 plus years experience. And I am the CEO of Govardhan Institute, or founder of that. And guys, आपको ये code after the session, actually up to the evening I will upload. So you will find this code from this GI Surat, Govardhan Institute, Surat.com. Okay, you will find this one, like ये जितना भी session का code है यहाँ से मिल जाएगा. Okay, now let me start. So हमारे पास अभी टोटल 2 बंदे हैं, that is Python and a database. So उन दोनों के पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. So if you want to start with the Python, then थोड़ा सा बेसिक्स हमको पता होना चाहिए, like the print function, input function, the if condition and looping. We will cover this. Okay, so पहले ये चीजें कवर कर लेते हैं. After that we will like work with the database. Okay, so let me start with the print function firstly. So here to work with the Python, I will use a simple database, and that's not sorry a simple editor I will use, that is Notepad++, not the Notepad but मैं Notepad++ यूज करूँगा. मैं कोई अलग सा like PyCharm और Jupyter notebook something like that मैं यूज नहीं करना चाहता. So simple editor is there, that is Notepad++, and in this I will just explain the print function. So like other language जैसे C, C++ or Java, we have to write a void main to start your program, but in Python we will directly use the print function. Okay, void main वगैरह जरूरत नहीं है हम लोग को. So guys, my first thing is I want to just print hello world. मुझे hello world print करना है. आप लोग को पता ही है अगर प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हो कि पहला प्रोग्राम यही होता है. So simply मैंने लिख दिया print hello world, and what I will do, मैं D drive में एक folder create कर रहा हूँ, that is online session. Inside that I will just save this program by 1.py. Okay, so now let me save this program, and to run this one मैं सिंपल अपने प्रोग्राम के टाइटल के ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ, एंड गाइस आई हैव अ ऑप्शन दैट इज ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन CMD. मतलब मैं ना तो कोई एडिटर यूज कर रहा हूँ ना कोई स्पेशल इसको रन करने के लिए कोई टूल्स यूज कर रहा हूँ. नॉर्मल आई विल जस्ट यूज द कमांड prompt. Okay, so now let me just write down 1.py. My program name is 1.py. So there are lots of options to run the Python program. You can just write down Python 1.py, or directly also you can just write down 1.py. So expected output is hello world. It will take a bit of time. So this is our first program, print hello world, and just run that 1 minute. So that's it. And guys, I just pass one more command, that is 1.py. So same output is there, that is hello world. So either of the options are there to run your program. Either you can use Python command and the file name, otherwise directly you can pass the file name program name. Okay, so up to this I think कोई problem नहीं है किसी को. So simple, मैंने hello world लिखा. Now guys, one more thing I want to do इसी program में, otherwise let me create one more one. मुझे अब 2 अलग अलग print statement use करना है, and I want to print some more messages like print welcome and print Python program. Create one more print actually. Okay, मैंने 3 print statement लिखे.
to display some messages. Like first one is welcome, another one is to Python, and third one is program. Okay, let me save this one by मैं एक और नाम दे देता हूँ इसका, like that's a 2.py. जैसे C language के लिए हम लोग को .c extension लिखना था, here I am using .py extension for the Python program. Okay, now expected output is welcome to Python programming in a single line. So guys, now we have two options to run the Python program. The first one is we can use a Python command, or directly you can write down your program. So मैं direct program का नाम लिख रहा हूँ 2.py, and my expectation is welcome to Python programming in a same line. So let me run. Oh, but this is not our expected output. यहाँ पे क्या output आया? Each and every statement, like जितने भी print statements हमने use किए थे, हर एक का output different line में. So what is actually happened? कि यहाँ पे हर एक का output different line में आने का मतलब कि कहीं तो slation included है. So guys, that is the thing. हर एक print statement में by default slation included होता है. मतलब this print welcome is considered as print plus slation. मतलब at the end of the print statement, Python will include a slation over there. Python खुद वहाँ पे include मतलब slation include कर देगा. But I do not want that. Guys, मैं पहले आपको सिर्फ print function explain करूँगा. After that input, then Python का basics complete होने के बाद SQL के साथ connect करते हैं. So guys, what we did, हमने सिर्फ print function का use किया था to display some message. But we realized, because of this output, we realized that by default slation included after each and every print statement. Now, I do not want that actually. Sorry, okay. I do not want that. So let me do one more thing. ऐसा कुछ कर देता हूँ, like this is my print welcome. After that, मुझे ऐसा लिखना था to Python. I just used two different print statement I used, but I do not want that slation after the first print statement. So guys, one keyword argument is there, and that is end. तो मैंने आपको जैसे बताया हर एक प्रिंट स्टेटमेंट के बाद स्लेशन इंक्लूडेड है. सो दैट स्लेशन इज इंक्लूडेड बाय दिस एंड कीवर्ड आर्गुमेंट्स. ओके, ये एंड की वैल्यू अगर आपको स्लेशन नहीं चाहिए देन आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हो. यू कैन जस्ट मेक ए रिक्वेस्ट टू पाइथन, ओए पाइथन आई डू नॉट वांट अ स्लेशन आफ्टर दिस प्रिंट. ओके, तो रिक्वेस्ट कैसे करें, पाइथन को इन्फॉर्म कैसे करें? सो जस्ट यूज कॉमा एंड दिस कीवर्ड आर्गुमेंट, आपको एंड की वैल्यू दे. ओके, सो व्हाट यू वांट आफ्टर दिस प्रिंट स्टेटमेंट? सर आई नीड अ स्पेस एक्चुअली. Okay, मतलब welcome के बाद आपको एक space चाहिए. Yes sir, I need a space. So just put one thing, and is equal to space. Okay, now let me run this. So my program name is 3.0. Now here it is. So after the welcome, there is a space. So I think it is clear to everyone. And now guys, one more blank line is here. Why this blank line is here? Because this print statement by default includes a slation after that print. Okay, so अगर आपको यहाँ पे भी वो blank line नहीं चाहिए, then what we can do? मैं एक और बार लिख देता हूँ, and is equals to empty string. Empty मतलब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. Okay, I do not want to add anything after this string. Now let me run this. Oh yes, that's it. So right now you can just get the difference between these two. You can just observe the difference. यहाँ पे एक blank line थी welcome to Python के बाद, and here we have no blank line after this welcome to Python message. So what is the use of this and? By default, Python print function of the Python provides the slation after each and every print. But if you do not want to print that slation, if you do not want to get the effect of the slation, then you can just use this keyword. Now guys, you observed, I think आपने एक और चीज observe की होगी. That's nothing but a single quotation. I just use the single quotation. You can use a double quotation also. आप इसकी जगह double quotation भी use कर सकते हो. Then what is the difference between that single and double quotation? अगर आप C language या C++ या Java background से हो, then आपको पता है single quotation is for character, sorry, and double quotation is for string. Okay, ये हमको पता है single quotation is for character and double quotation is for string. Now let me do one thing. यहाँ जो single quotation वाला program था, okay, let me just use one more thing. एक और example ले लेते हैं हम लोग. Now same thing I want to do with this double quotation. So let me just save it by 4.py और मैं ये double quotation use करूँगा. Okay, वो end की value specify करेंगे. Now मुझे सिर्फ difference चाहिए. Single quotation और double quotation का क्या difference है? Oh, no difference is there. Single और double quotation में यहाँ output में कोई फर्क नहीं आएगा. So I think it is clear to everyone कि single और double quotation में Python में कोई difference नहीं है. That means what?
That means what? Single quotation and double quotation में अगर कोई difference नहीं है, in C and C++ this is for character, and in Java that is for string. So in C and C++ in Java, single quotation is for character and double quotation is for string. But in Python, character data type is not there. In Python, character data type is not there. So single quotation और double quotation दोनों की दोनों चीजें string के लिए use होती है. ये सिर्फ आपके knowledge के लिए, मुझे ये session के लिए उसकी जरूरत नहीं है. मतलब अगर ये जो आप welcome to Python लिख रहे हो, if you use a single quotation then it is okay to wrap this message. अगर आप single quotation use करो it is okay. अगर आप double quotation use करो then it is okay. इसको कोई फर्क नहीं पड़ता. Okay. So in this I just explained one thing. That is, if you want to print anything, just use the print function, but be careful. Be careful. After the print, a slation is included. And if you do not want a slation, then after your message, you can just use this keyword argument. And that's nothing but the n equal to something, whatever you want. जैसे मुझे comma चाहिए. Okay, जैसे मुझे comma चाहिए इस message के लिए. So I just add a comma over. So I think it is clear to everyone. Now guys, the next thing is, if I have some variables and if I have some variables and I want to print the value of that variable, जैसे कि C language में मेरे पास कुछ variable होता था तो मैं ऐसा कुछ लिखता था, print f % b, a. So what is the way to print the values of a variable in Python? Okay, so like first thing is guys, Python is a dynamic type of programming language. Dynamic type of programming language means जब भी आप वेरिएबल्स बनाना चाहते हो, देयर इज नो नीड टू यूज द डेटा टाइप. एक्चुअली अलाउड ही है, डेटा टाइप लिखना अलाउड नहीं. ओके, सो अगर आपको वेरिएबल बनाना है, जस्ट यूज असाइनमेंट ऑपरेटर. ओके, मींस इक्वल टू ऑपरेटर. जैसे मैंने लिख दिया a इक्वल्स टू 10, देन ऑटोमेटिकली दैट वेरिएबल विल बी क्रिएटेड. ओके, नाउ लेट मी ट्राई टू प्रिंट दिस, एंड इफ यू वांट टू प्रिंट द वैल्यू, सिंपली राइट डाउन a. इट्स क्वाइट सिंपल. ओके, सिंपल उसका वैल्यू प्रिंट कर दीजिए. दैट्स क्वाइट सिंपल. लेट मी सेव दिस. सो दैट्स वेरिएबल 1.py. मैं इसको रन कर रहा हूँ. मैं एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 1, सॉरी 10, एंड हियर वी हैव. ओके, सो एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 10, एंड नाउ यू नो दिस कि ये ब्लैंक लाइन यहाँ पे क्यों आया, बिकॉज आफ्टर ईच एंड एवरी प्रिंट द स्लेशन इज देयर. सो इस प्रिंट के बाद भी एक स्लेशन इंक्लूडेड था. सो लाइक आफ्टर दैट अ ब्लैंक लाइन वाज देयर. नाउ गाइस, वन मोर थिंग, लाइक a इक्वल्स टू 10 मैंने सेट कर दिया. नाउ कैन आई डू वन मोर थिंग, b इज इक्वल्स टू 1.2, एंड कैन आई प्रिंट दिस b. नाउ c इज इक्वल्स टू welcome, print this. Let me try. So expected output is 10, 1.2, and welcome. So let me run this. Oh yes, it's working. And slation is gifted by the Python, so हम लोग को उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हर एक आउटपुट को मुझे डिफरेंट लाइन में चाहिए. So here we have. But now I'm worried, sir. ये A का data type क्या? What is the data type of this? What is the data type of this B, and what is the data type of C? And especially मैं इस C के data type में तो ज़्यादा interested, because मैंने single quotation लिखा था. Okay, as well I can use a double quotation also. So I am like I'm interested in this कि भाई ये double quotation string है या single quotation string. सर ने तो बता दिया कि Python में character data type नहीं, but I am not like sure कि वो data type है कि नहीं. Character नाम का data type Python में available है. So I want to just check this thing. Okay, and especially, okay, now let me मैं इससे पहले आपको एक चीज और क्लियर करता हूँ. If you want to comment this line, then we have a hash symbol is there. Okay, hash से एक line comment होती है. So now guys, once again I want to run this because right now मैंने double quotation use किया था to grab this message. So let me run, so it works. Now the next thing I am like I'm interested to discuss the data type of this A, data type of this B, and data type of this C. Because मैंने integer, float, character या string ऐसा कोई data type use नहीं किया डेटा को, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए. तो मुझे चेक करना था कि पाइथन बैकएंड में कौन सा डेटा टाइप यूज करता है. ठीक है, ये a के लिए कौन सा डेटा टाइप है. सो लेट मी टेक वन मोर प्रोग्राम. सो लाइक a इज इक्वल्स टू 10. नाउ इफ यू वांट टू प्रिंट द वैल्यू, वी हैव print a statement. Now if you want to print the data type of that, then we have a function, inbuilt function is there, that is type. We have a inbuilt function is there, and that is a type. So मैंने क्या लिखा, type in the bracket. Now let me save this. So variable 2.py, and to run that we have to simply write down variable 2.py. Oh, that's it. So here we have 10 as expected, and this is the data type. So that's nothing but a class integer. आप कहीं गूगल करोगे तो आपको एक सिंपल सी चीज मिलेगी. इन पाइथन एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, हर एक चीज ऑब्जेक्ट है. ओके, सो दिस a is also the object of type integer. This a is also the object of type integer. Now let's
just write down b is equals to 1.2 and b. And guys, मुझे ये अलग अलग प्रिंट नहीं चाहिए, इन ए सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट मुझे दोनों वैल्यूज प्रिंट करने, ओके, मतलब टाइप ऑफ b and b. So you can just use a single print also, but you have to just use the comma separation. Okay, जितनी भी वैल्यूज आपको प्रिंट करनी है, just use the comma separation. Let me run this. So expected output is 1.2 and class float. So here we have expected output is 1.2 and class float. Next thing is now मुझे वो कैरेक्टर में इंटरेस्ट था. Let me simply write down c equals to a, and मैंने एक ही कैरेक्टर लिखा है. Okay, I want to just check the type of this. So as per our like previous knowledge, so हम लोग को यहाँ पे string मिलना चाहिए. As per our previous knowledge, output must be string. But let me check the output. Oh yes, it's a string. सिंगल कोटेशन लिखोगे और आपके पास सिंगल कैरेक्टर भी अगर कंटेंट में है, then still the output is string, because in Python like character data type is not there. Okay, now if you use a double quotation, अगर आप इसकी जगह double quotation भी लिखते हो, then it's okay, and still you will get the string as an output. Just observe this. Here we have string, and the same way here we have string. Okay, so this is something about the print function, how to print more than one values, and how to get the data type of a variable, and one more, how to set the values in a variable in a Python. So this is something about the print function and how to work with the slation also. Okay guys, so if you have a doubt in a print function, then you can just ask. Yes, there is a data type for date and time, but there is a class actually. I have a question actually. Chat box में एक message आया हुआ है कि is there any data type for date and time? Yes guys, actually these all are the classes, predefined classes are there. Okay, so अगर आप date and time के साथ work करना चाहते हैं, then you have to import a module that is import time for the time and import date time for date and time. And after that, if you want to create an object, then you have to just write down like this p equals to time. Okay, but this is not in like मैं आपको Python के random questions पूछना allow नहीं करूँगा, because मुझे session time to time खत्म करना है. Okay, so अगर इसमें किसी को problem है, otherwise आपको मैं अपना number दे दूँगा, आप WhatsApp कर सकते हो अगर आपको कोई और questions है. Okay, so guys, is there any problem in this? How to create a variable, how to print the data, and how to print the type of that. ठीक है, so I hope कोई question है तो हम लोग एक मिनट के लिए यहाँ पे वेट कर सकते हैं. How to print the data, how to print the data type, and how to print the value. Okay sir. So I hope आप लोग को इस, हाँ जी अजय. Sir, I have a question related to this data type. If we go ahead and if you have a time to Ajay, you can, yes Ajay. Yeah. Yes. Or you can answer this question after this session or whenever. I will share you on WhatsApp as well. Sure, So, sure, no problem. Okay, that's it. Okay. So should I ask question? Yes, you can. Yes, please. Okay. So, sir, so everything is object in the Python. So, is there any way to pass by value, or we can only do the pass by reference in Python? Both the things are there. Like you have lots of functions in there. If I have a list, like let me just take an example. So the question is that everything is an object in Python. So we have some problems. Whenever you will pass the data as an argument, आप कोई function में अगर data argument में pass करते हो, then you have two different options in a C language, that is call by value and call by reference actually. But now, Yes, if you are working with the reference type of data, like object type of data, then there is only one thing is there, that is called by reference only. मतलब अगर आप कोई function को data pass करोगे, then that function can modify the original value. So is there any option to pass the value? So sir, simple thing is that अगर मैं आपको एक list बना के बताता हूँ, like this is the Python data structure, that is a list. So it has a function to make a duplicate copy. So अगर आपको इसका duplicate copy create करना है, then in this way you can create. So Python having an inbuilt function that is copy. Okay, और यहाँ पे इसको deep copy and shadowing दो चीजें बोली जाती है. Deep copy मतलब that's like duplicate value, and shadowing means it's a reference. Okay, and if you want to list out all these functions, then we have one more option. अगर आपको ये functions Google नहीं करना है, then you can do one more thing. That's you can just write down help and then lst. Okay, if you will run this, then जितने भी functions lst के अंदर available है, all the functions will be listed out. Let me save this like help.py.
So here we are. So lots of things are there about the list. So first thing is this list is a class. List is a class and it is inherited from the object class. There is some introduction about that and some functions are there. So आप जैसे space press करते जाएंगे, you will get a lots of details over there. Okay, तो आप इसमें search कर सकते हैं कि copy नाम के function का क्या meaning है and etc. things. So in each and every data type, Python having the copy function. Okay, and inbuilt के अंदर जैसे integer, float, complex, string, इनके अंदर call by reference होता है, sorry call by value होता है, तो आप value copy करते हैं. सर एक्चुअली यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है बिकॉज बैकएंड में हीप मेमोरी यूज होता है. सो हीप मेमोरी मतलब अगर आप ऐसा लिखते हो a equals to 10 देन a के लिए मेमोरी एलोकेशन नहीं होता, इट जस्ट अलोकेट द मेमोरी फॉर 10 एंड उसको a के अंदर रेफर करता है. सो इन फ्यूचर अगर आप ऐसा लिखते हो b equals to 10, ओके गाइस लेट आई टेक एन एग्जांपल सो आपको ज्यादा समझ में आएगा. सो गाइस अगर मेरे पास एक वेरिएबल है, value of that is 10 and if I want to print the hash code of that, hash code is different than the memory address, but if you want to just print the hash code then we have a function that is id. अब id के थ्रू इसको प्रिंट कर सकते हैं. जस्ट 1 मिनट, मेरा वो पुराने प्रोग्राम में चेंजेस कर दिया. सॉरी, लेट मी क्रिएट वन मोर id of a and तो मैंने सिर्फ id लिखा हुआ. आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू प्रिंट दैट वैल्यू, मुझे सिर्फ उसका मेमोरी एलोकेशन चाहिए. That's not the memory allocation. Once again, I want to clear that is a hash code. So this is the hash code of that function. Okay, and guys, अगर मेरे पास एक और वेरिएबल है, and if I want to print an ID of that, तो मैंने उसका memory allocation कुछ अलग तरीके से किया है. Okay, but still ID will be same. Okay, so backend में heap use होता है. It's not in C++ और Java. ये value based इसका memory allocation है. Okay, इसका memory allocation पूरा value based है. जिस हिसाब से आप वैल्यू सेट करोगे अकॉर्डिंग टू दैट इट विल अलोकेट मेमोरी. सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, बट स्टिल अगर आपको ज्यादा डिटेल में जाना है देन वी विल डिस्कस ऑन व्हाट्सएप एक्चुअली. Sure. Thank you, sir. Guys, we learned two functions. The first one is a type. It is just used to print the data type of a particular variable, and one more is the ID. ID is not right now important for this session, but ID से आपको hash code मिल सकता है. So that's that. So up to this we just learned. Okay, now we already discussed one more function that is an help. So guys, if you want to just know the list of functions of this integer type, you can do one more thing, like you can just write down help in the bracket a. I just use a print function to display all the details of this a. So as we know, a having an 10 as a data means it's a type of integer. So I just applied the help function on an integer. Let me run this. It's a var2. So here this is the like some documentation for the integer class. Okay, so this is actually inheritance. Round bracket में object लिखने का मतलब the object is a super class of the int class, and by default it uses the base 10. Base 10 means it works with the decimal values only, and this is the description. Okay, so you can just read this. And guys, these are some functions. These functions you can use with the integer. Okay, so lots of functions are there. मैं space press कर रहा हूँ, so space का मतलब एक पेज जाएगा वहाँ पे. So lots of things are there. Okay, so आप इसको read कर सकते हो. I just inform you how to open the help. Okay, and one more thing is installed with the Python in your system. That's editor. Ideal बोलते हैं जैसे हमको. So I have a shortcut for that. मैंने यहाँ पे एक shortcut बना रखा है in my system. आप यहाँ पे task bar देख सकते हो. Google Chrome के just right hand side पे मेरे पास एक था. So मैंने वो shell open किया. Now let I just write down a equals to 10. And अगर आपको help के through सब functions नहीं देखने तो आप a dot भी लिख सकते हो. A dot and just print the control space. So some useful functions जो आप call कर सकते हो वो सब का list यहाँ पे मिल जाएगा. So if you do not want to use that help, you can just go through this one also. Okay, guys, 1 minute. Within a minute I will continue. Just give me a minute. Mehul sir, Krishna, Mehul sir, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. कृष्णा, हम लोग को जो एक्चुअली जूम ने एक लिमिटेशन सेट किया हुआ है ना, वो अप्लाई हो चुका है हाँ. एक्चुअली. 40 मिनट्स का मैसेज आ Okay. चुका है एक्चुअली.
So after 9 minutes we have to मतलब restart this. So guys मैं अभी तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग, but after 8 to 9 minutes ये मीटिंग क्लोज हो जाएगा. हमने ट्राई किया था कि सेशन कंटिन्यू 2 आवर्स के लिए चले, बट जूम ने मतलब वो अलाउ नहीं किया हुआ है. So after 9 minutes please rejoin. ओके, बट अभी तो कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कब रिजॉइन करना है. सो एक थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा सबको. So guys, It's okay, sir. okay, so guys, let me continue. So here this is nothing but a print, how to print the data and how to print the ID and type of that, and how to get the help of the particular data type. Okay, how to print the help of a particular data type or particular variable. So up to this, is it okay? Now let me just go through the next one, that is an input function. So अभी तक हम लोग को वेरिएबल बनाना आ गया, how to print the value, and now guys I want to get some value. मुझे डायनेमिक वैल्यूज चाहिए, मुझे ऐसे स्टैटिकली वर्क नहीं करना. I do not want to work like that, a equals to 10 or a equals to hello, something like that. मुझे यूजर से वैल्यूज चाहिए. So guys, for that we have an input function, and you can just print the message over here, enter data. So मैंने एक message print किया, enter data, and I want to store the answer of this input in a variable. Okay, so I want to just get the value from the console, from the user, and I just want to print that. So let me just save this one by get1.py, and मैं इसको run कर रहा हूँ guys, that is get1.py. So a message is there, enter the data. Let me enter a tag. So Python is free from data type, so इस प्रोग्राम में आप high भी input कर सकते हो, it doesn't matter. 90.2 means I just entered integer, float, and string type of data. Here I entered integer data, here I entered string type of data, and here I entered a float type of data. So I was surprised जब मैंने इसको पहली बार देखा, तब मैं खुद थोड़ा सरप्राइज हुआ था कि यार इनपुट का ऐसा कैसा मैजिक है कि मैं जो टाइप का डेटा एंटर करूँ वो उससे फैच कर रहा है और एक के अंदर स्टोर कर रहा है. So I had an idea कि how to print the type of this key. So let me just print the type of a. तो हमको पता चलेगा कि actually हमने integer input किया. So a का data type क्या था. अगर मैं string input करूँ तो a का data type क्या है, and if I entered a float, then what will be the data type of it. So let me just run this program once again. So मैं यहाँ पे hello input कर रहा हूँ. So what is the expected output? हमने input करने के बाद data को print किया था. So that will be hello, and type of that will be string. So yeah, that's it. As per the expectation, that was hello and class string. Now if I entered 100, then my expected output is that was 100 over here, and here it must print integer. Oh, but it just print a string actually. So that was the actual concept कि जब आप input function का use करते हो, then it will read any type of data, but be careful, it returns the data in a string format only. आप कुछ भी input करो, it returns. जैसे मैंने यहाँ पे 1.2 input किया, so it returns that data, it just returns this data, but be careful, the data type of that one is a string. मैं ये क्यों बता रहा हूँ, because the simple concept is there. अगर मुझे simple एडिशन वाला प्रोग्राम लिखना था, सिंपल लाइक मैं ऐसा लिखूं, ओके मुझे 2 नंबर चाहिए, सो मैंने एक मैसेज दिया, एंटर a एंड एंटर b. आई जस्ट कॉपी दिस स्टेटमेंट, एंड मुझे सिंपल एडिशन करना था. तो इफ a and b are the type of integer, अगर a और b दोनों integer टाइप के, then I can easily perform the addition operation. But if they are of some different types, then plus will not work or will behave like some will not behave like an addition. Okay, वो arithmetic operator की जगह कुछ और behave कर सकता है. So let me just save this and check कि क्या output आ रहा है. So get2.py. Now let me run this get2.py. So guys, I entered 10 and 20 or 10 and 29. I just entered, and expected output was 39. But हम लोग को यहाँ पे like 10, 29 output में मिला. In short, that just concatenated. Okay, ये plus ने उन दोनों को concate कर दिया. Why? Because क्यों ऐसा हुआ? Because A and B both are the type of string. जैसे हमको पता था इनपुट का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए था, बट इनपुट हम लोग को ऑलवेज कौन सा डेटा, कौन से फॉर्मेट में डेटा रिटर्न करेगा, इट ऑलवेज रिटर्न द डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. सो A and B both are the type of string, और स्ट्रिंग के ऊपर जब प्लस अप्लाई करते हैं बाय डिफॉल्ट दे विल बी मर्ज्ड और कॉन्केटेड. ओके, तो दोनों कॉन्केट पे एंड दैट विल आंसर विल बी स्टोर्ड इन ए C. तो जब आप C को प्रिंट करोगे, then it will always return a concatenated value. So अगर मैंने 10, 20 input किया, so expected output is 30, but right now it is 10, 20 because A and B both are the type of string actually. So what is our expectation? What is our requirement? Not the expectation. What is our requirement? I want to perform the arithmetic operation, not the concatenation. I want to perform the arithmetic operation.
So arithmetic operation, if you want to perform, then A and B must be the type of integer. Okay, A and B must be the type of integer. So let me do one thing. When I will get this value, I know the input, the return type of this input is a string. So I want to just type cut that one in integer. मैं उसको integer में type cast करूँगा. So that's quite simple. मैंने integer नाम का एक function use किया and just I put the input function in the round bracket of that integer. Okay, now I want to just display the type of A and B. मुझे type check करना था because I want to be sure कि A और B का data type क्या है. मुझे surety चाहिए थी. Okay, so what I did, I just typecast this output of this input, the return type of this input. So let me just enter something, 10 and 20. Oh yes, that's right now type of integer, and we got the 30 as per our expectation. So guys, that's that. Simple thing is, what is the return value, return type of this input? So it can read any type of data, but always the return value of that one is string. So if you want to convert that one in a float, then just use a float in the place of integer. If you have to convert the return value of this integer in a, sorry, return value of this input in integer, just use the input. Just use the integer. Sorry. And after that, you can just perform the operation as you want. So that's that. So guys, मैं session restart कर रहा हूँ. Please rejoin. And meanwhile, सब join करते हैं. तब अगर कुछ doubt है तो हम लोग वो solve करते हैं. So please rejoin the session, guys. मैं restart कर रहा हूँ. Okay. Thank you.